पिलामाने द मच अवेटेड अवेती ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 11 साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारानी सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू आउ पिलामाने एई कोर्स रे आमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रो बेसिक टॉपिक सब कवर करबा जहाँकि क्लास 11 साइंस रो पाठ बुझिबारे तुमको बहुत हेल्प करिवो तो आ वेट कौन कर वीडियो तल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अच्छी से क्लिक करके कोर्स पे रजिस्टर करो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास सो आमे लास्ट क्लास रे कोन पढिथिलु लिमिट एंड कंटिन्यूटी लिमिट केते बेले एग्जिस्ट करे व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ओके आ फंक्शन केते बेले कंटीन्यूअस हेता है जेते बेले लिमिट एग्जिस्ट करूथबा सर्टेन पॉइंट रे आउ f of x equals to say point रे तार value function रे value at that point धरा if the function is continuous at x is equal to a that means limit exists at that point and the LHL and RHL both are equal and equal to f of a ताहले हमें कहि परिबा हम फंक्शन होची कंटीन्यूअस से सर्टेन पॉइंट रे सो लिमिट और कंटिन्यूटी को आगु को बढ़ेगी हमें तारा नेक्स्ट स्टेप पढ़िबा आज दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन सो डिफरेंशिएशन हमें कोन पई यूज करू फर्स्ट जिंस होची कोनोसी जिंसरा रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन अमाउंट जानिबा पई माने जेमति तमरा डिस्प्लेसमेंट तमे तळे मोशन विषय पढुछ डिस्प्लेसमेंट चेंज होची डिस्प्लेसमेंट को रेस्पेक्ट रे चेंज होची टाइम रेस्पेक्ट रे जतळे चेंज होची माने ताको हमें कोन कहूछु रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू कोन के कहि परिबो इक्वल्स टू स्पीड और वेलोसिटी ओके बुझी पारुछ सो से डिफरेंशिएशन करिबा पई फर्स्ट होची हमको देखिया को पड़िबा फंक्शन केते बेले डिफरेंशिएबल की नुहे फंक्शन जदी डिफरेंशिएबल हेतिबा ताहले ही हमें तार डिफरेंशिएशन बाहर करि परिबा सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन तमे जदी लिमिट चैप्टर पढिछ ताहले डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट गोटे लाइन रे म एक्सप्लेन कर दोछि तुमको let fx be a real function. What do you mean by real function? If the value of the function is real, then we can call that function as real function. Okay? Let fx be a real valued function defined on an open interval a b. सपोज गोटे इंटरवल ए बी रे हम फंक्शन डिफाइन करूची ओके आउ हमें सर्टेन पॉइंट से टू काढी देलु सी लेट अस सी बी ए पॉइंट व्हिच बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी देन आवर फंक्शन fx is said to be differentiable माने केते बेले हमें कहि परिबा हम फंक्शन डिफरेंशिएबल की नाही the fx is said to be differentiable at x is equal to c केवल c पॉइंट रे हमें गोटे पॉइंट रे में डिस्कस करछु डिफरेंशिएशन ओके if and only if जदी हमें डबल f ना बाय if रे ता माने if and only if and only if limit of x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exists finitely. So केते बड़े डिफरेंशिएबल हबा गोटे पॉइंट दिया है जी c जदी when limit of x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exists finitely exists माने कोन और finitely माने कोन finitely माने लिमिट रा गोटे फाइनाइट वैल्यू बाहर उठबो
exists माने कौन तमन समझते जानिचो when limit exists when LHL equals to RHL then LHL कौन ही जबारा so LHL will be limit of x tends to c minus fx minus fc divided by x minus c. So ଯେତେବେଳେ x tends to c minus हुए हमें कौन नो x is equal to केते नहीं था c minus h when h tends to 0 limit chapter माने पका so limit of h tends to 0 f of c minus h minus fc divided by c minus h minus c it is c cancel egala so this is equal to limit of h tends to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h. This is our LHL. किंतु आमे एठी आपको कोन डिफरेंशिएबिलिटी रे नउजु सो आमे ताको गोटे नुवा ना दोजु that is known as LHD that means left hand derivative. Write down left hand derivative. Similarly RHL कौन हिजबा हमरा right hand limit so RHL equals to limit of x tends to c plus fx minus fc divided by x minus c so now we can replace x as c plus h when h tends to 0 right hand limit रे जहाँ हुए c plus h minus fc divided by c plus h minus c c cancel egala so this is equal to limit of h tends to 0 fc plus h minus fc divided by h and this is known as RHD or right hand limit. So a function is differentiable if and only if LHD equals to RHD. Then we can say differentiable function. Where differentiable? एटी को पॉइंट नहीं जो हमें at x is equal to c कारण हमें केवल गोटे ही पॉइंट कंसीडर करूछु एठी up to this point everyone is clear or any doubt okay now let's move forward am I audible Yes, ma'am. yes Yes. you don't have any doubt No, ma'am. तो ये जो डिफरेंशिएबल कलु हमें फंक्शन को ये जो लिमिट टा बाहर कलु दैट इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c fx minus fc divided by x minus c this is known as differentiation of fx at c or f dash c. This is known as differentiation or derivative of fx at c. आपको हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कही परिबा सो LHD को हमें कौन कहू LHD को एक्सप्रेस करू f डैश c माइनस एट c जदि हमें करू जो LHD सेमती RHD एट c ताको हमें एक्सप्रेस करू f डैश c प्लस
सो ए डिफरेंशिएशन जिनसाटा कि डेरिवेटिव यूजुअली डेरिवेटिव जहाँ को कहू हमें डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फर्दर क्लासेस आपको तमे डिटेली पढ़िबो जतबेले मैथ्स रे पढ़ा हबो तुमको इ क्लास 11th रे और 12th रे डेरिवेटिव कोन ओके सो डेरिवेटिव जदी कॉमन लैंग्वेज रे हमें जानिबा सपोज y is equal to fx is given so here तमे कोन जानछो y is which type of variable x is which type of variable x is a dependent or independent variable Independent. x is independent variable y is dependent कहाँ ऊपर dependent x ऊपर dependent okay so derivative एठी जदी हमें differentiation of कि derivative of fx बाहर करिबा माने कोन f dash x कहिले हमें कोन बुझू f dash x को हमें dy by dx भी लिखि पारू derivative of y with respect to x ता माने होची rate of change of y with respect to x माने x केते चेंज हेले y केते चेंज हबो नॉर्मली ताकू ही हमें डेरिवेटिव ऑफ y बोली कहि थाउ dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x or f dash x के ताकू y dash बोली भी एक्सप्रेस करथांती सब सिमिलर जिंस ओके f dash x equals to y dash equals to dy by dx certain cases रे के ही y1 भी ताकू कहंती everything is similar आर बहुत सारा एप्लीकेशन तमे करबो फिजिक्स रे डेरिवेटिव रो मैथ्स रे डे टू डे लाइफ रे जतबे रेट ऑफ चेंज हमें बाहर करू जतबे डेरिवेटिव यूज होता है जेमति तमे बाहर कलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ds by dt that is your velocity then derivative of velocity with respect to time कौन है बेटा एक्सेलरेशन ओके माने कितने टाइम चेंज रे वेलोसिटी कितने चेंज होची दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन एबे क्लियर व्हाट इज डेरिवेटिव एनी डाउट No, ma'am. no so now let us move to next part so आमे गोटे फंक्शन continuous केतेबेले जानथि who can tell me when the function is continuous graphically को मो definition पचाऊ function is continuous जतबेले आमे कोनोसी फंक्शन रो ग्राफ ड्रा करूछु जदि सर्टेन पॉइंट रे कोनोसी ब्रेक नाही कि कोनोसी जंप नाही ताहले आमे सेही पॉइंट रे फंक्शन कंटीन्यूअस बोली कहि थाउ yes or no Yes, ma'am. yes तो गोटे फंक्शन में एग्जांपल नहीं जिबा धरा मॉड्यूलस ऑफ x if fx is equal to modulus of x okay तार ग्राफ केमती होबा this is the graph of modulus of x so fx is equal to mod x हमें डिस्कस कर सरछो अभी सरे yes or no Yes, ma'am. एटा कंटीन्यूअस फंक्शन बोली भी डिस्कस करछु कि नहीं Yes, ma'am. but जदि मो this is at this point x is equal to 0 x 0 रे मुझे दी कंसीडर कली ओके तार LHT केते हबो LHT equals to limit of h tends to 0 f of केते हुए c minus h minus fc divided by minus h हाँ ना कौन हबो x tends to 0 जता बड़े हबो h tends to 0 स्टार्टिंग रू बाहर करिबा हमें चलो यदि स्टार्टिंग रू नहीं जिबा लिमिट ऑफ
x tends to 0, fx minus f of 0 divided by x minus 0. Okay? This is f dash x at x is equal to 0. Definition हिसाब रे ठीक अछि? हाँ? Okay. So this is limit of x tends to हमें यदि LHD नेलु बा left hand limit नेलु कौन वे 0 minus f of x minus f of 0 divided by x. So this is equal to limit of h tends to 0, f of 0 minus h minus f of 0, which is 0 divided by x बदलने में कौन नबा 0 minus h. So this is equal to limit of h tends to 0, 0 minus h, तमने modulus of 0 minus h minus modulus of 0 divided by minus h. A point जाए कहाँ किसी doubt? No. So जदि अभी हमें h रा value ऐसे कुछ अगर put करीबा कौन मिलीबा हमको minus h modulus minus 0 divided by minus h. So h by minus h equals to minus 1. Okay? Minus 1 निकला? मैम ए लाइन टा टिके बुझी पल्ले ए last line टा okay. h रा value हमें एकी put करूँ. h किते? h tends to 0. एटा 0 minus h अच्छी minus h रा modulus आसिगला किते? इथे हमें h रा value ही ना उनो minus h रा modulus किते? h by h है गला limit of h tends to 0. h cancel है गला minus 1 रहिला. So h रा value ही आसिला नि सीधा हमें value minus 1 पाइलु. और again I should explain. अच्छा okay, let us. So here limit of h tends to 0. एटी कितना रहिला mod minus h divided by minus h. कारण 0 तो एटा 0 है गला. Okay. So this is equal to limit of h tends to 0. Mod minus h कितना है गला? Voice is breaking. Voice is breaking. Now it's audible. Yes, ma'am. Yes. Okay. So first कौन कलु हमें 0 minus h कितना होगा? Minus h ही जीवा. Modulus of minus h equals to plus h and r value is 0. So limit of h tends to 0, h by minus h. This is equal to limit of h tends to 0 minus 1 और जो constant है तारा value constant ही है इधर. So minus 1 बाहर ला LHD. Similarly तमें यदि RHD बाहर करीबा RHD बाहर इबा किते plus 1 हवा. Try yourself. RHD plus 1 हवा because it is 0 plus h mod minus mod 0 divided by plus h है. So h by h will be plus 1. So here LHD is not equals to RHD. को जगह रे? When x is equal to 0 at x is equal to 0 point रे LHD equals to RHD नु है. तमने सही point रे आमा function differentiable होनी. Understood? But graph तो continuous अच्छी. कारण सीधा हमें एमती आसु छु एमती ग्राफ ड्रॉ कर दो छु. हाँ कि नहीं? ग्राफ नहीं जाऊ छु. So we can say a function is differentiable if it is continuous
at that point. जदि फंक्शन कंटिन्यूअस हे नथिबा से पॉइंट रे ताहले से सेठी डिफरेंशिएबल भी हबन. ओके, आउ गोटे जिंस मन रखा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. एवरी differentiable function is continuous, but not every continuous function is differentiable. This is important. यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हेची त माने ऑलरेडी से कंटीन्यूअस हे सारी थिबा, बट सबो कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नुहंती. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ आमी जेंति इंटरवल नेथिलु, जेतबेले फंक्शन रा कंटिन्यूटी करथिलु, इंटरवल नेथिलु. सो ओपन इंटरवल ए बी जदि आमे नै जाउछु, आमे कहि परिबा ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल on an interval AB if it is differentiable on every point in AB. तामाने A रु B भितरे जेते पॉइंट अछि, each and every point रे जदि differentiable ताहले the function is differentiable on that interval AB. जेमति continuous केस रे हमें डिस्कस करथिलु. सो क्लोज्ड इंटरवल ले कोन हबा? क्लोज्ड इंटरवल ले फर्स्ट होची function is differentiable on an interval AB closed if differentiable on every point in AB and differentiable at endpoints also. Endpoints A and B also. माने फर्स्ट केस रे कोन सब पॉइंट रे डिफरेंशिएबल हेतिबा किंतु ए आ बी पॉइंट रे डिफरेंशिएबल हबा मैंडेटरी नुहे, माने जरूरी नुहे. किंतु क्लोज्ड इंटरवल ले कोन हेले सब पॉइंट रे डिफरेंशिएबल हेतिबा, बट ता संगरे जो स्टार्टिंग आउ एंड पॉइंट हमर अछि ए आ बी रे भी डिफरेंशिएबल हेतिबार अछि. सो this is all about differentiability. ए जो आमे पढिलु f dash x, आमा f dash x equals to limit of x tends to c fx minus fc divided by x minus c. f dash x or f dash c भी आमे तक कोई परिबा. आकु कोन कहू? आकु आमे कहि थाउ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. How to solve some question using first principle derivative you are going to study in your maths chapter limit and differentiability in class 11. Okay, so ame see first principle of derivative derivation mu likh deli. Okay, this is derivative. First principle of derivative or differentiation jaha bhi likh pari. So a first principle of derivative use करके ame किछि फॉर्मूला डिराइव करिछु जोटा कि हमर आगु को डिफरेंशिएशन रे बहुत बेसी यूज हबो. तमे तो मैथ से करबो से फॉर्मूला किंती बाहरिबो तमे से गुडा चेक करि पार. बट नाउ I have listed some formulas that will be useful
for you using the first principle of derivative. So d by dx xn d by dx xn माने कौन जेतेबेले y is equal to x to the power n. So dy by dx को आमे rate of change of x to the power n with respect to x बोली कही था. Okay. So d by dx xn equals to n x to the power n minus 1. इटा समझते write down करो. ये तुमको physics रे बहुत useful होगा. बहुत question solve करिया पाई. It is required. Next is d by dx of e to the power x. माने जत्ता बड़े y होची e to the power x. जदि आर मीनिंग के बुझी पारो ना मते पचारि परिबो. This is equal to e to the power x. माने e to the power x को डिराइव कले भी तार वैल्यू सेम ही रुहे, चेंज हुए. ओके. नेक्स्ट इज आउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें कौन पढ़थिलु a to the power x. So d by dx of a to the power x when a is greater than 0. Eta compulsory condition equals to a to the power x into log e a. Next is d by dx of log x. That means log ex or log x. Ln x. This is equal to 1 by x. Next one is d by dx जदि base किछि अलगा अछि log function दा. Okay. माने log base a x जदि अछि. Then it will be 1 by x into log e a. Okay. Next, move to derivative of all the trigonometric functions. So next one is d by dx of sin x. माने derivative of y when y equals to sin x with respect to x. This is equal to cos x. Next is derivative of cos x with respect to x is equal to minus sin x. Next is derivative of tan x equals to sec square x. Next is derivative of cot x equals to minus cos x square x. Then derivative of sec x equals to sec x into tan x. And the last one is derivative of cosec x equals to minus cosec x into cot x. So write down all these formulas. It will be very helpful. तुमको ये सब फॉर्मूला मन रखिया पड़ेगा. फॉर्मूला जदि मन रखिलानी ताले differentiation करिबा is quite difficult. So first formula देखो कौन अछि? Derivative of x to the power n with respect to x माने dxn by dx आमे ताको को is equal to n into x to the power n minus 1. So derivative of x square केते हबा के मते बाहर करी की कहि परिबो डायरेक्ट फार्मूला पुट करी की derivative of x square के कहि परिबो सुश्री सुहाना सुहेना
हाँ केते हबो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर केते यस 2x गुड ओके जदि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 अछि हाँ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 केते हबो अच्छा who can tell me raise your hands किए कहि परिबा का को आंसर जणा अछि 10x to the power 9 yes good n को केते होची n रो वैल्यू तमे देखि पारो n केते 10 ही जाउची सो n जगह डायरेक्ट पुट करो 10x to the power n minus 1 okay now tell me what will be the value of so derivative of root x माने कोन who can tell X me to the power 1 by 2. yes x to the power 1 by 2 तो in case of n तमे केते नबो 1 by 2 नबो तमे तो जल्दी वैल्यू बाहर करी कि कुआ केते हबो 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1 तो केते हेगला x to the power minus 1 by 2 so what do you mean by x to the power minus 1 by 2 तमाने 1 by root x yes or no 1 Yes, by ma'am. root so derivative of root x is equal to 1 by 2 root x ए केते गुडा जिंस तमे पूरा माइंड रे फीड करके रखिबार अछि जेमति कि तमे सेठी बसी कि बाहर करिबनी अंडरस्टूड